हेलो फ्रेंड्स। आज का लोअर लिम्ब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट नोट पूछी जाती है एंड वेरी वेरी कॉमन दे आस्क एज अ शॉर्ट नोट। एमसीक्यू में भी मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे एक ट्रिकी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और कॉमनली जो रूट वैल्यू पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है फीमोरल नर्व। So femoral nerve is a very very important short note from your university exam point of view. Now in nerve first you have to write introduction. So it is nerve of which region? So femoral nerve is the chief or main nerve of the anterior compartment of thigh. So it is the nerve of the anterior compartment of thigh. Okay, so first introduction, then you have to write origin and the root value. So it originates from the lumbar plexus. So femoral nerve is a branch of lumbar plexus and it is formed by the dorsal division of anterior primary rami of L2, L2, L3, L4 level. Okay, so it is formed or its root value is dorsal division of anterior primary rami of L2, L3, 4. You can remember like this: femoral nerve and D for dorsal division, FD as a fixed deposit. Obturator nerve is having also same root value L2, L3, L4, but ventral division. Okay, that is the main difference. So obturator nerve is a root value ventral division of L2, L3, L4. Femoral nerve root value dorsal division of L2, L3, L4. और आप याद कैसे रखोगे? It is as a FD, femoral nerve, D for dorsal, fixed deposit. Okay, and obturator OB for the ventral. Okay, so what is introduction? It is the chief nerve of the anterior compartment of thigh. It originates or branch of lumbar plexus and its root value dorsal division of anterior primary rami of L2, L3, L4. Okay, then comes the course and relations. Okay, so what is the course of femoral nerve? Now in thigh ये pubic symphysis है, so यहाँ पे आता है इंक्वाइनल लिगामेंट। तो ये मिडल पार्ट ऑफ द, तो यहाँ पे L2, L3, L4 सेगमेंट आएगा। ओके, देन दिस इज द थाई। ओके, यहाँ पे आएगा नी जॉइंट। ओके, नाउ फिर यहाँ पे जो मसल आता है दैट इज फर्स्ट वन इज द इलियाकस। मिडिल साइड पे यहाँ पे आएगा पेक्टिनियस। ओके, फिर उसके नीचे यहाँ से ये पूरा जो मसल आता है ये सार्टोरियस है। ओके, और यहाँ पे पूरा जो आएगा वास्टस मसल्स। सो वी कैन लेबल इट रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस मिडियलिस। और जस्ट नी जॉइंट के यहाँ पे आएगा आर्टिकुलरिस जेनु मसल। ओके, तो ये हो गई मसल्स वहाँ पे। अब फीमोरल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, फीमोरल नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम L2, L3, L4 सेगमेंट। ये तीनों से ये फीमोरल नर्व बनी। देन इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी अबो, तो यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी आएगी। देन इट लीव्स द एब्डोमिनल कैविटी just passing below the inguinal ligament. Here it lies lateral to the femoral artery. Okay, then nerve gives the branch to the iliacus. Okay, it gives the branch to the pectineus. Then it immediately divides into two branches. Okay, one branch supplied to the sartorius. Okay, and continues as a two cutaneous branches, medial cutaneous nerve of thigh and intermediate
cutaneous nerve of thigh. So this is anterior division of the femoral nerve. Now it's a posterior division which goes on the lateral side and supplies to vastus rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, and vastus medialis. Vastus intermedius gives the branch to the articularis genu, and it continues as a cutaneous branch that is called as a saphenous nerve. That is the cutaneous branch coming from the posterior division. Okay, so this is whole distribution of femoral nerve. So what is the femoral nerve course? Femoral nerve enters into the femoral triangle. So it enters into this femoral triangle. So यहाँ पे रहेगा femoral triangle somewhat. Okay, so it enters into the femoral triangle by passing deep to this inguinal ligament. Above that, it lies on the posterior abdominal wall and deep to the fascia iliaca. That is the fascia which lies over the iliacus and the psoas major muscle. Then it lies between the iliacus and the psoas major muscle, or the groove between the iliacus and psoas, passes deep to this inguinal ligament. In the femoral triangle, it lies lateral to this femoral artery, and then immediately in the groove between the iliacus and the psoas, it divides into two branches, anterior division and the posterior division. Okay, then anterior division supplies to this sartorius muscle, and it gives two cutaneous branches, medial and intermediate cutaneous nerve of thigh. Posterior division supplies to the rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, and vastus medialis, and it gives the cutaneous branch, that is the saphenous nerve, that continues downside, which is the largest cutaneous branch in the body. It is coming from the nerve to the vastus intermedius, just at that level. Now nerve to vastus intermedius gives a branch to the muscle that is called as articularis genu. So that is the course of the femoral nerve. ओके, फिर हमने ये कोर्स एक्सप्लेन किया. फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ब्रांचेस ऑफ द femoral nerve. Now branches, first in the abdominal part, it gives the, or main trunk of the femoral nerve gives the two muscular branches. Which two muscles? These two muscles, iliacus and the pectineus. So it gives the two branches. One is the iliacus and the pectineus muscle. Now in the thigh, it is divided into two branches, anterior division and the posterior division. Anterior division gives muscular branch. It supplies to the sartorius muscle, and it gives the cutaneous branch to medial and intermediate cutaneous nerve of thigh. Okay, these are the two branches. Posterior branch, it gives the muscular branches, supplies to the rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, vastus medialis, and vastus intermedius gives a branch to articularis genu, that is askin. The articularis genu is a branch of posterior division of femoral nerve, and it is given by the branch to vastus intermedius. It's a cutaneous branch, is called as a saphenous nerve. It is the largest cutaneous branch in the body. So saphenous nerve is a branch of posterior division of the femoral nerve. Saphenous nerve is a branch of femoral nerve, and it also gives the branches to the joints, knee and the hip joint. Okay, so ये हो गए branches anterior and posterior divisions के. And then comes to the applied part. Femoral nerve lies lateral to femoral artery in base of femoral triangle.
Okay, and here is the site it is used to give the femoral nerve block. In the anesthesia, femoral nerve block is given just to achieve the to block the sensations of the femoral nerve, and it is given at the lateral to the palpation of the femoral artery. And femoral nerve injury may be get injured in the trauma or wound in the groin region. These are the two applied part of the femoral nerve. So clear what thing you have to write. So हमें एक डायग्राम याद रखनी है ये वाली. ओके, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन है. फिर फ्यूमरल नर्व का इंट्रोडक्शन एंटर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की है. ओरिजिन लंबर प्लेक्सस से आती है. रूट वैल्यू रिमेंबर डॉर्सल डिवीजन. कैसे याद रखना है? FT फिक्स डिपॉजिट, F फॉर फ्यूमरल नर्व, D फॉर डॉर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर पैरामेर ऑफ L2 L3 L4. ये चीज़ हमेशा MCQ में पूछी जाती है, वाइवा में भी पूछी जाती है, क्योंकि फ्यूमरल नर्व एंड ऑब्चुरेटर नर्व का रूट वैल्यू सेम है, L2 L3 L4. डिफरेंस सिर्फ क्या है? फ्यूमरल में डॉर्सल डिवीजन है, ऑब्चुरल में वेंट्रल डिवीजन से. कोर्स एंड रिलेशन हमने देख लिया. पहले वो एब्डोमेन से आती है, फिर डिप टू इंग्वानल रिंग है, फिर फ्यूमरल ट्रायंगल में, फिर एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाइज टू व्हाट एंड व्हाट. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन नर्व एब्डोमेन में ट्रंक से दो ब्रांचेस आते हैं, मस्कुलर ब्रांचेस टू द इलेकस एंड पेक्टिनियस. थाई में दो डिवीजन्स आती है उसके, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर डिवीजन से मस्कुलर ब्रांच टू द सार्टरियस. ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है. नर्व टू सार्टरियस इज गिवन बाय द विच ब्रांच? एंटीरियर डिवीजन या पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फ्यूमरल नर्व? इट इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ फ्यूमरल नर्व. टू क्यूटेनियस ब्रांचेस, medial and intermediate cutaneous nerve of thigh. Lateral cutaneous nerve of thigh is a separate branch of lumbar plexus. Posterior division के तीन ब्रांचेस आते हैं. फर्स्ट इज द मस्कुलर टू द मसल्स ऑफ दिस रीजन, रेक्टस फ्यूमोरिस, वास्टस इंटरमीडियस, लैटरलिस मिडियलिस. वास्टस इंटरमीडियस से ही एक ब्रांच जाती है, सप्लाइज टू द आर्टिकुलरिस जेनु. Articularis genu is supplied by which nerve? Femoral nerve. Which branch of femoral nerve? Posterior division of femoral nerve. And specifically which branch? Nerve to vastus intermediate. ये MCQ में पूछा जाता है. फिर joints, knee joint and hip joint दोनों को, and cutaneous saphenous nerve is the longest cutaneous nerve in the body, is a branch of posterior division of femoral nerve. ये याद रखना, ये MCQ एंड वाइवा में दोनों जगह पे पूछा जाता है. अप्लाइड पार्ट पे फ्यूमरल नर्व ब्लॉक एंड इंजरी टू द फ्यूमरल नर्व इन केस ऑफ इंजरी टू द ग्रोइन रीजन. ओके, तो ये हो गई शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूमरल नर्व.